Now check. To check. To check करना. Okay, students, just wait for 2 minutes. So again, just explaining about this NQT. So this TCS NQT is this about this test pattern. So this integrated test is of 190 minutes, consisting of two mandatory sections, part A and part B. Part A is a foundation. Duration of this part A will be 175 minutes, which contains the section on numerical ability, verbal ability, and reasoning ability. And part B is the advanced section. During duration of this advanced section is 115 minutes, with sections on advanced quantitative and reasoning. This part is there, and advanced coding ability. So in this advanced coding ability, only two questions, two problem statements will be provided, and the time duration to solve this two problem statement is a 90 minutes will be provided you. So in within the 90 minutes you have to solve these two coding questions. Okay, so this training is totally focused on the coding part, advanced coding ability. Okay, so the main purpose of this training, we will provide the preparation is aligned with the latest TCS NQT coding patterns. Okay, we'll cover all the mostly commonly asked coding patterns in the previous TCS test. We'll focus on the time optimization and logic clarity. It will develop the confidence to code under the time pressure. So that is the main purpose of this training session. Okay, so we are going to miss in this two coding questions you can solve in the different, there are different options are given to you. You can solve this coding questions in Java, Python, or in C++. So in this training session we are going to cover the programs in Java only. Okay, we are covering the all the questions in Java, not in Python and C++. We are going to cover the questions in Java. So we'll start this training session with basic programs. Okay, so in that basic level programs, first we'll cover the programming part, different problem statements. Okay, first we'll cover the different problem statements using if else statement. Okay, we'll cover the problem statement in if else, and looping statements, control statements. So we'll start with the if else part. So just one problem statement is there. Okay, first problem statement. So just problem statement is you have to accept two numbers from the user, two numbers from user, and check first number is divisible by second number or not, without using mod operator. Okay, so can you explain me how you can solve statement? You have to accept the two numbers from the user, and you have to check the first number is divisible by second number or not, without using a mod operator. So how you can solve this problem statement? Any idea? Yes, anyone? Yes, Praveen. Hello, am I audible to all of you? How you can solve this problem statement? Yes, sir.
Okay. Yes. Okay. No problem. Accept two numbers from the user and check first number is divisible by second number or not without using mod operator. How you can solve this problem statement? Okay. Yes, using if else, but how you can use if else? All students are saying Python, but no, sorry. Just this training session is based on it's a Java based training, so you can solve in Python also. Okay, you can solve it in Python also, but this training session is based on Java. Okay, so if else, so how to solve using the if else? Okay, so first we'll divide the first number. Suppose if n1, there are two integer variables n1 is there, the value of n1 is 10 and the another number is n2 suppose, and तो मुझे check करना है. So mod, using mod easily we can check. So if n1 mod n2 equals to 0, then first number is divisible by second number. But question में मैंने mention किया कि don't use the mod operator, don't use the mod operator. So in that case what we can do? In that case what we can do? Okay, yes. First we'll divide the first number by second number. Okay, so in that case, first we'll divide n1 by n2. Okay, first we'll divide the n1 by n2. Then it will return the quotient value. Suppose if 10, first number is 10 and second number is 2. So 10 divided by 2, quotient value is a 5. Okay, so here the value of C will be 5. Because 10 divided by 2 quotient answer is a 5, so that answer will get stored in the C quotient value. Then what we can do, if C matlab that quotient value into n2 into second number, quotient value is a 5 into n2, if this answer is equals to n1, equals to n1, then that number, then the first number is divisible by second number, otherwise the first number is not divisible by second number. So in this case it's true. So first number, in this case the first number is divisible by second number. अगर मैं यहाँ n2 में 3 लेता हूँ, so 10 divided by 3, quotient value will be 3, quotient value will be 3. So 3 into n2 की value again 3 है, so 3 into 3 9 equals to n1 है क्या? So नहीं है तो मतलब divisible नहीं है. But अगर यहाँ मैं 2 लेता हूं तो फिर वो डिविजिबल है. तो वहां क्या आता है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 इंटू n2 की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू n1 है क्या? सो यस. तो इन दैट केस अगर 2 लेता हूं तो, क्योंकि 2 लेता हूं तो यहाँ 5 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन वैल्यू इज अ 5 एंड 5 इंटू n2 की वैल्यू 2, सो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10. यस, so then divisible, otherwise not divisible. So this way we can check the first number is divisible by second number or not. So in that case, first we'll accept the two numbers from the user. Okay, first we'll accept two numbers from the user. We'll accept the two numbers from the user. Okay, so first we'll accept the two numbers. First number n1, n2. Then if n1 mod n2, okay, n1 divided by n2, then this quotient value
will multiply with n2 into n2 exactly equals to n1. If this condition is true, then print system dot out dot println yes divisible, else not divisible. So this way we can check the first number is divisible by second number or not. Okay, this way we can check the first number is divisible by second number or not. So enter the two numbers. Suppose if I enter the first number as a 10 and second number as a 3, so not divisible. Instead of 3, if I enter the first number as a 10 and second number as a 2, so then it's a divisible. So क्या किया मैंने यहाँ जस्ट फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से पहले डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन की वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n2 exactly equal to n1, then divisible, otherwise not divisible. So it is a simple if else statement is there. Okay, so if you want if you want to take the screenshot. Just a minute, just yes, yes. Sir, can you please comment the problem statement in the program? Okay. So while just clicking the screenshot, we will get Okay. it that what Okay. exactly is the problem. Okay. Excuse me. Yes. Hello. Hi, yes. Hello. Hi, yes. Hello. 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 Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Hello. Hi, yes. Sir, all students are saying Python because it's so easy to learn and write. So why should not we going with the Python? Actually, we'll try to conduct the in Python because this is in Java. This training session is in Java. So we'll try. We'll give your message to our head about the about the students' requirement. But this training session is totally depends on Java. Okay, but your head
suppose that sir is say yes, then you can repeat this all Yeah. from starting. Yeah, from start. But sir, now take your time and just ask to your sir. Can you do it? So because there is a time duration in 1 week, we have to cover this all these questions, and so if I cover the questions in Python Okay, also, so then it now then it will take a time. Then much time is required. So उसके कारण just okay, no issue, sir. Take your time, but lot of students are saying Python, so think about it. okay, no problem. Okay, thank you. Okay. Hello sir. Yes. Yes. हाँ सर, am I audible? हाँ सर, तो आंसर लिखते हो पूरा ब्लैंक स्क्रीन रहेगा क्या? कोई मेथड दिया होगा? मेथड नहीं दिया होगा, ब्लैंक स्क्रीन होगा. जस्ट यू हैव टू टाइप द एंटायर क्वेश्चन, एंटायर प्रोग्राम. और मेन मेथड दिया होगा. हाँ, मेन मेथड मतलब दिया होगा, बट यू हैव टू राइट अ फंक्शन. ओके, जस्ट मिनट. सर यस. सर आउटपुट एक कंपलसरी एक है, जस्ट सिर्फ टेस्ट केसेस पास होने चाहिए. टेस्ट केसेस पास होनी चाहिए. टेस्ट केसेस पास होनी चाहिए. नॉट ओनली आउटपुट, टेस्ट केसेस पास होनी चाहिए. थैंक यू. ओके. My answer. Another question is there problem statement. Just note down this problem statement. Actually, one automobile company. Note down the problem statement. Note down the problem statement. Second problem statement. An automobile company. Just note down this problem statement, all of you. An automobile company manufactures both. An automobile company manufactures both two-wheelers and four-wheelers. An automobile company manufactures both two-wheelers and four-wheelers. A company manager wants to make the production of both type of vehicle wants to make the production of both type of vehicles according to the data given below. According to the data given below. First data is total number of vehicles. First data is total number of vehicles. First number is total number of vehicles. And second number is total number of wheels. And second number is total number of wheels. So listen the question again. One automobile company is there which manufactures both two-wheeler, four-wheelers.
Okay, one automobile company is there which manufactures both two-wheeler and four-wheelers. The company manager wants to manufacture both four-wheelers and two-wheelers from the given data below. तो उसमें data तुम्हें क्या provide किया? First value is the total number of vehicles which includes both four-wheelers and two-wheelers, which includes both four-wheelers and two-wheelers, and second value is total wheels. Okay, suppose टेस्ट केसेस दिए हैं तो उसमें फर्स्ट केस देता हूं मैं तुम्हें. इन फर्स्ट केस इनपुट इज total vehicles are, suppose for example total vehicles are 200. Okay, total vehicles are 200, and second value total wheels are 540. So from this 540, your task is to find how many two-wheelers and how many four-wheelers we can manufacture. Okay, your task is to find the total number of two-wheelers and total number of four-wheelers we can manufacture. Okay, read the question properly again. Okay, there ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज देयर जिसमें तुम्हें प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है कि टोटल व्हीकल्स इतने हैं, इसके अंदर तुम्हें टोटल व्हील्स इतने प्रोवाइड किए हैं. तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टू व्हीलर्स एंड हाउ मेनी फोर व्हीलर्स वी कैन मैन्युफैक्चर फ्रॉम दैट वैल्यू. सो इन दिस केस how to find the total two wheelers and four wheelers that we can manufacture. Suppose just the logic of this is that ki suppose just we can consider, so suppose all these are the four wheelers. Okay, suppose all these total two four wheelers are there, suppose 200 four wheelers. So to manufacture 200 four wheelers, how many wheels are required? So for one four wheeler, four wheels are required. So for 200 four wheelers, 800 wheels are required. Okay. Into this, we'll find the total vehicles, and second value is total wheels. So from this, what you have to find? How many two wheelers and how many four wheelers that we can manufacture. So first, suppose if 200, suppose if 200 are the total four wheelers, then how many wheels are required? 800. So from that 800 we'll minus this total wheels which are provided. Okay, तो अगर हम 800 से 540 minus करते तो the answer will be 260. So 260 अगर wheels, if the remaining wheels are the 260, उसको अगर हम 2 से divide करते हैं, so that will be a total two wheelers that we can manufacture. Okay, that will be the total two wheelers that we can manufacture. So how to find the total two wheelers? Total two wheelers is equals to, how to find the total vehicles into 4. Okay, total two wheelers, total vehicles into 4. Okay, minus the total wheels, Okay, so this value जो भी आएगी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. Okay, इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2. So जो भी वैल्यू आएगी, so that will be the total two wheelers, that will be your total two wheelers. Then you can find the total four wheelers. Total four wheelers is equals to total two wheelers, total vehicles minus total two wheelers. So that will be total four wheelers. तो यहाँ भी देखो क्या होगा. सपोज इफ द टोटल व्हीकल्स आर द 200 into 4 800 minus
टोटल व्हील्स कितने प्रोवाइड किए 540, अगर इसको हम माइनस करते तो दैट वैल्यू विल बी 260, सो 260 डिवाइड बाय 2, सो इसका आंसर आता है 130, सो ये 130 हो गए हमारे टू व्हीलर्स। और अगर हमारे टोटल व्हीकल्स 200, 200 में से हम 130 माइनस करते हैं, ओके उसमें से अगर हम 130 माइनस करते हैं तो 70, सो 70 विल बी योर फोर व्हीलर्स। So answer is that 130 two wheelers and 70 four wheelers can be manufactured from this 540 wheels. Okay, so that is your answer. System dot out dot println total two wheelers equals to ठीक है। So if I run this, so enter the total vehicles, then enter total टू व्हीलर्स। इसमें वापस कुछ कंडीशंस भी तुम्हें चेक करने की, वो निगेटिव वो ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, ओके इट शुड बी इवन नंबर। यहाँ कुछ कंडीशंस भी तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होते हैं, तो वो क्वेश्चन कंडीशंस भी तुम्हें क्या करने चेक करने। तो फ्रॉम 200 टोटल व्हीकल्स एंड यहाँ फंक्शन कॉल करना भूल गया मैं, जस्ट मिनट, यू हैव टू कॉल द फंक्शन फाइंड and to that function you have to pass that two parameters. So 200 so total two wheelers that we can manufacture from that is 130 and total four wheelers are 70. Is it clear? Yes, any doubt in this? Okay, again मैं एक बार वापस क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। Question is that one automobile manufacturing company is there. So in that automobile manufacturing company, manager wants to manufacture both two wheelers and four wheelers from the given data. Data is that total vehicles. Data है कि इसमें first value is a total vehicles and second value that you have to input as a total number of wheels. Okay, total number of wheels. So क्या प्रोवाइड किया एक बार फिर से देखो क्वेश्चन में। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें तुम्हें प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है कि टोटल व्हीकल्स जिसके अंदर क्या इंक्लूडिंग है टू व्हीलर्स प्लस फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स प्लस फोर व्हीलर्स टोटल व्हीकल्स एंड टोटल व्हील्स जिसमें तुम फोर व्हीलर प्लस टू व्हीलर दोनों मैन्युफैक्चर कर सकते हो, टू व्हीलर के प्लस फोर व्हीलर के टोटल व्हील्स तुम्हें प्रोवाइड किए हैं। ओके, टोटल व्हील्स प्रोवाइड किए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ इस एग्जांपल एक टेस्ट केस दी हुई है तुम्हें जिसके अंदर मैंने टोटल व्हीकल्स प्रोवाइड किए है सपोज 200 एंड टोटल व्हील्स तुम्हें प्रोवाइड किए 140। So from this 540 wheels
200 ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। 540 में 200 टोटल व्हीकल्स कितने मैन्युफैक्चर होने चाहिए? 200। तो फ्रॉम दैट 200 योर टास्क इज कि कितने फोर व्हीलर्स हो गए एंड कितने टू व्हीलर्स हो गए, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो तुम कंसिडर करो कि जितने भी व्हीकल्स दिए वो सारे के सारे व्हीकल्स सपोज तुम्हारे फोर व्हीलर्स ही है। कंसिडर करो कि ऑल व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स। तो अगर मैं ऑल व्हीकल्स फोर व्हीलर कंसिडर करता हूं, सपोज दिस ऑल दिस 200 व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स, सो 200 इंटू फोर, 200 इंटू फोर, सो 200 इंटू फोर, so that will be 800, means 800 wheels are required। अगर मैं सारे के सारे vehicles अगर मैं फोर व्हीलर कंसिडर करता हूँ तो हाउ मेनी व्हील्स आर रिक्वायर्ड? 800, बट हमें इतने प्रोवाइड नहीं किए। हमें कितने प्रोवाइड किए? 540। तो तुम क्या करो, जो भी वैल्यू आती है फोर व्हीलर के लिए जितने व्हील्स चाहिए उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करो? जो जितने व्हील्स तुम्हें प्रोवाइड किए, जितने व्हील्स तुम्हें प्रोवाइड किए वो माइनस करो। तो वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज अ 260, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी योर, उतने सारे क्या आते हैं तुम्हारे? टू व्हीलर्स आते हैं। ओके, दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैं अगर 800 में से 540 को माइनस करता हूं तो 360 260 आता है। 260 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 130, 130 कितने आ रहे हैं? 130, 130 आर द टोटल टू व्हीलर्स। और मुझे अगर 132 व्हीलर्स मिल गए तो इजीली यू कैन फाइंड द फोर व्हीलर्स। तो जितने तुम्हारे टू व्हीलर टोटल व्हीकल्स है 200 में से अगर हम टू व्हीलर्स माइनस करते हैं, ओके, 200 माइनस टू व्हीलर्स कितने आ गए? 130। तो वैल्यू कितनी बचती है? 70, दैट इज योर टोटल फोर व्हीलर्स। सो यू कैन प्रिंट दैट फोर व्हीलर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आदि इकडे येऊन फॅन चालू, चल ना लवकर। क्वेश्चन, okay, just listen. They are not mentioned. Why four? Because it's a logic to find the four wheeler two wheelers. Okay, it is a logic to find the four, how many four wheelers are there. So just अगर हम consider करते कि all these are the two, they are not mentioned कि these are the two wheelers and four wheelers. They mention this 200 total vehicles. These 200 are the total wheeler भी है and four wheeler, not three wheelers. Three wheeler, थ्री अगर तुम मल्टीप्लाई बाय थ्री करते हो तो वो थ्री व्हीलर्स होते हैं ना तुम्हारे। थ्री व्हीलर्स नहीं है, ओनली टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स आर देयर। ओके, टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। तो अगर हम जो टोटल व्हीकल्स है वो टोटल व्हीकल्स जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे फोर व्हीलर कंसिडर करते हैं, फोर व्हीलर्स। तो हाउ मेनी व्हील्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट 200 व्हीकल्स? तो 200 फोर व्हीलर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो 800 व्हील्स आर रिक्वायर्ड फॉर, बट इतने सारे व्हील्स हमें प्रोवाइड नहीं किए। कितने प्रोवाइड किए? 540। तो तुम्हें क्या करना है कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको तुम्हें उससे माइनस करनी है। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको अगर तुम टू से डिवाइड करते हो तो उतने सारे टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं उसमें से। ओके, उसमें से कितने मैन्युफैक्चर हो सकते हैं? टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर। और फिर जो टोटल व्हीकल्स है उसमें से टू व्हीलर्स माइनस करते हो तो यू विल गेट द टोटल फोर व्हीलर्स। इज इट क्लियर? एक्स प्लस वाई। Hello. हाँ, यस बोलो। यस सुयोग। Sir, can you share the question list? Uh, Can you share the question list on Telegram channel? okay, so tomorrow I will share you the questions. Okay, thank you. Okay. Question, रिया क्वेश्चन इज दैट, जस्ट मैं अभी नोट करने को बोला था।
किसी ने नोट किया होगा तो यहाँ चैट बॉक्स में पेस्ट करते हो क्या? अगर किसी ने नोट किया है तो कैन यू पेस्ट दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? रिसेंटली जो हुआ वो क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ, अभी जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर. ओके, आई विल ओके. ओके. और नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हाँ, टेलीग्राम की लिंक मैंने अभी नहीं भेजी है, मैं कल तुम्हें भेज देता हूँ और उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस है वो भी भेज दूंगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये क्लियर हुआ क्या सबका? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So next problem statement is on looping statements. So first we'll solve some pattern programs. Okay, first we'll solve some pattern programs. Suppose I want to print this particular pattern. Okay, so I want to print this particular pattern. Okay, so how we can solve this? So pattern program, in pattern program, mostly first you have to check ki how many rows are there. Okay, in pattern program, first you have to check how many rows are there. Okay, and second you have to check how many columns are there. So in this problem statement, how many rows are there? 5 rows. So out there are two loops, mostly two loops. You can depends, maybe 3 loops हो सकते, 4 loops हो सकते, depends on the problem statement, space print करने whatever. But in this problem statement, first mostly होता है row outer loop that decides the number of rows and inner loop that decides the number of columns. So in this problem statement, rows, how many rows are there? 5 rows, and columns are also 5. So if I write this for loop for integer I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus, then inside this another for loop for z equals to 1, z is less than equals to 5, and z plus plus. And if I print something, suppose if I print star, so this 5 rows 5 columns entire loop, entire pattern will be only star 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 star. But I want to print this particular pattern. So how to print this particular pattern on the screen? Anyone, can you explain? Just take this screenshot of this pattern. We can use if else condition. Yeah, what if else condition you can write here? If I is equal to 1, Hmm. then I can go with printing the integers value. Hmm. One of my friend is just
prestige it, I think that's it. Yes, correct. Okay, so in this pattern program, first row, the entire first row. Okay, suppose if I check the values, if I when I execute this particular program, so what will be the values of I and j? If I execute this particular program, it will start I will be 1, then inner loop के अंदर ये I1 होगा तो फिर it will come inside the J loop, तो J loop will again start with 1, so 1 is less than equals to 5, yes, तो J plus plus, तो J ही इंक्रीमेंट होगा, फिर J3 होगा, J4 होगा, J5 होगा, मतलब it will print this entire row, it will print the entire row. ओके, आफ्टर दैट जे का लूप जब जे की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू नेक्स्ट मतलब सेकेंड रो आएगा, एंड सेकेंड रो आएगा तो यहाँ वापस जे की वैल्यू फिर से 1 से 5 तक होगी, सो दिस वे. तो इन फर्स्ट रो, इन पूरे फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 1 रहेगी एंड लास्ट रो में आई की वैल्यू 5 होगी, तो इन फर्स्ट रो लास्ट रो, in first row last row we have to print a star, first row last row we have to print a star. Then same way j क्या डिसाइड कर रहा है तुम्हारा, j decides the column value, मतलब यहाँ फर्स्ट वन जे हर बार फर्स्ट 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट टाइम उसकी वैल्यू होगी 5, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन पूरे फर्स्ट कॉलम में जे की वैल्यू 1 होगी एंड लास्ट के कॉलम में जे की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम वी हैव टू प्रिंट स्टार, एंड इन बिटवीन दिस वी हैव टू प्रिंट दिस नंबर्स. हाउ टू प्रिंट दिस नंबर्स, तो यहाँ जे की वैल्यू ये हर बार जो चेंज होती है वो इनर लूप की वैल्यू होती है, तो ये जे की वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं, बट जे की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो 1 2 3, तो यहाँ से पहली बार प्रिंट करता हूँ तो यहाँ 1 मतलब यहाँ 1 और यहाँ जे की वैल्यू 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी. 2 3 4 की जगह मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 2 3, सो 2 3 4, 2 minus 1 3 minus 1 4 minus 1 करता तो you will get the 1 2 3. So here we'll write the double for loop for int I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus, then inside this for int j equals to 1, j less than equals to 5, j plus plus, and if condition, if I equals to I decides the row I equals to 1 or I equals to 5 or j equals to 1 or j equals to 5, means first row first column last column is there, then print star, print star. स्पेस दे रहा हूं मैं यहाँ स्टार्टिंग में या एंड में, दोनों जगह कहीं भी दे सकते हो, तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में स्पेस दे रहा हूं. else dot out dot println, print the space first and then print j minus 1 value, j minus 1. देन जब j का लूप कंप्लीट होगा, j का लूप कंप्लीट होगा मतलब एक रो कंप्लीट होगा तुम्हारा, तो जैसे एक रो कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डोंट यूज अ println because println always prints on the new line, println always prints on the new line, यहाँ भी use print function only. So this way we can print this pattern. जस्ट मैं यहाँ प्रिंट दिया मैंने, बट प्रिंट के अंदर मुझे एक्चुअली स्लैश एन देना था. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पैटर्न समझ में आ गया? I equals to 0, I equals to num.
पवन. ये क्वेश्चन, is it clear this question? Any doubt? Hello, am I audible? सर इसको हेलो हाँ yes बोलो. हेलो हाँ yes बोलो. हाँ सर इस क्वेश्चन के लिए कोई कंस्ट्रेंट रहेगा क्या? इस क्वेश्चन के लिए सर इस क्वेश्चन के लिए कुछ कोई कंस्ट्रेंट रहेगा क्या? अच्छा मतलब कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा, बट मे बी वो नंबर ऑफ रोज की वैल्यू तुम्हें मतलब वो प्रोवाइड करने को बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट द नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट करने हैं, वो तुम्हें हो सकता है. बाकी कुछ कंस्ट्रेंट नहीं होगा इस पे. सपोज सपोज इस क्वेश्चन के लिए दिया होगा तो बिग ऑफ एन में कोड लिखो तो तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा मुझे. सर इस क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रेंट दिया होगा तो यू शुड राइट कोड इन अ बिग ऑफ एन देन हाउ शुड वी राइट सर? हाँ वो तो वही तो बोला ना चाहिए. अगर n है सबके n की वैल्यू, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द यूजर. बिग ऑफ एन हाँ n की वैल्यू यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द यूजर. सो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, सपोज n है, सपोज n we accepted from the user, so here we can write n. So in that case I is equals, just instead of 5 you can write a n, and in the if condition you can use I is equals to 1, I is equals to n, z is equals to 1, z is equals to n. So you can use n here instead of 5. Sir, he is asking about time complexity. सर ये हमने कोड सर ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में होगा ना सर? तो कोई कंस्ट्रेंट आया तो बिग ऑफ लॉग इन में कोड लिखो तो कैसे करेंगे? सपोज तो बिग ऑफ कोई कंस्ट्रेंट आ सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूँ. नहीं, इस क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रेंट नहीं होगा. एग्जाम नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट नहीं होगा. जस्ट इतना हो सकता है कि n की वैल्यू तुम्हें मतलब n की वैल्यू तुम्हें यूजर से एक्सेप्ट करनी होगी, इतना ही होगा. कंस्ट्रेंट नहीं होगा दूसरा कुछ इसमें, पैटर्न के प्रोग्राम में तो एटलीस्ट. Just take the screenshot. जस्ट ये हो गया. एक बार मैं स्लाइड्स, स्टार्टिंग के स्लाइड्स फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हुए, तो मैं एक बार फिर से वो स्टार्टिंग के स्लाइड्स थोड़ा रिपीट करता हूँ. Just in within 2 minutes, just wait. So about the Profound is a private edutech company established in 2013, headquartered in Pune. It's a Pune's leading IT training and placement company. Okay, so Profound is we are the leading IT training and placement company. We provide the different services in IT, retail training, college trainings, corporate trainings, and we provide the placement assistance to students. We have the training centers in Pune and Nashik. Okay. We provide the different popular courses in full stack Java, full stack .NET, full stack Python, web development, data science with GenAI, AIML with GenAI, cloud computing, and software automation testing. So these are the different popular courses that we provide the students, different students. Our top recruiters are like Accenture, Amazon, Bitwise, Deloitte, Sybase, HCL. These are the different companies. These are the top recruiters from which recruits our students. Now about this ये ट्रेनिंग जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग
इट्स मोस्टली अभी जो टेस्ट होने वाला है टीसीएस का एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, उसी पे डिपेंड्स है, जिसका टेस्ट जो है 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 20th March 2026। Who is eligible to give the test? B.Tech students, CME, M.Tech, MSc Computer Science, MCA. These students are eligible to give this test. When you qualify this test, these are the different CTC packages provided by the TCS. Okay, this test is they are hiring in two categories, prime and digital. तो prime का different CTC and digital का different CTC उन्होंने mention किया हुआ है. So if you search on the Google, you will get the detailed information about this TCS NQT. So जो टेस्ट होने वाला इस टेस्ट का पैटर्न जो है, जो टेस्ट होगा वो 190 minutes का होगा. It will contain two sections. One is a foundation section and another is the advanced section, part A, part B. So the foundation section is totally based on the numerical ability, verbal ability and reasoning ability. Okay. And part B जो है, it is advanced. It's a 115 minutes का जो second part होगा तुम्हारा part B होगा. डिफरेंट मिनट्स, मतलब उस पर्टिकुलर लिमिट में ही वो तुम्हें कवर करना है. उसी के अंदर उस पार्ट बी के अंदर भी वापस दो पार्ट्स है. उसमें एक सेक्शन है जो एडवांस्ड क्वांटिटी एंड दूसरा होगा एडवांस्ड कोडिंग एबिलिटी. इस एडवांस्ड कोडिंग एबिलिटी के अंदर तुम्हें दो कोडिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उसके लिए तुम्हें 90 minutes प्रोवाइड किए जाएंगे. तो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, ये ट्रेनिंग सेशन is focusing on only on advanced coding ability. तो जब ये टेस्ट होगा तुम्हारा, उस ट्रेनिंग टेस्ट के अंदर जो कोडिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें तुम्हें प्रोग्रामिंग का चॉइस होगा. दैट मे बी अ जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस. सो यू कैन चूज एनी वन. तो ये जो ट्रेनिंग सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं ये मोस्टली जावा बेस्ड है. ओके. तो इसमें हम डिफरेंट कोडिंग पैटर्न जो मोस्टली कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, उसका लॉजिक कैसे डेवलप करना है. ओके. उसमें इट विल बी फोकस ऑन टाइम ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉजिक क्लियरिटी. इट विल डेवलप द कॉन्फिडेंस टू कोड अंडर द टाइम प्रेशर. ओके. Okay. So next coding question is इसमें पैटर्न का ही सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कवर कर रहा हूँ. तो जिसमें तुम्हें yes, In TCS NQT, C Sharp is available? no C sharp, only Java, Python and C++ options are there. Okay, so how to solve this problem statement? ये पैटर्न प्रोग्राम तुम्हें प्रिंट करना है. जस्ट अभी ये एक्चुअली यहाँ अभी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट लाइक प्लस का साइन है, स्टार, जिसमें तुम्हें स्टार प्रिंट करने प्लस के साइन के को, मतलब प्लस साइन जैसा. सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट? पैटर्न कैसे प्रिंट करोगे? Yes, anyone? If I equal to 3 or j equal to 6, then print star, otherwise not print else. Yes.
Yes, Mahesh. If for third row, third column, third row, third column. Okay, third row, third column will print the star, otherwise print space, otherwise print the space in the same part. divided by 2. Yeah. So if अगर n है तो n divided by 2. Yes, correct. So if I equals to n divided by 2 or j equals to n divided by 2. So but actually अगर मैं 1 से start कर रहा हूँ तो 5 that, oh. So it will give the 2 only, because अगर if the value of Start with 0. start with 0, yes, but if I start with 0, so in that case print star, else print the space, double space. I की value भी 0 से start होगी. Okay, just take the screenshot of this problem statement. First take the screenshot of the problem statement and then problem program. Okay, next problem statement, note down this problem statement. It's based on the arrays. Note down next problem statement. Problem statement is given an integer array. Given an integer array. Note down this problem statement. Given an integer array, ARR of size n. Given an integer array of size n, the task is to find the task is to find the count of elements, the count of elements whose value is greater than count of elements whose value is greater than all 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 of its prior elements, whose value is greater than all of its prior elements. The first element of the array should be the first element the first element of the array should be
in the count of the result. In the count of the result. Listen the question again. Listen the question again. Given an integer array, given an integer array, ARR, given an integer array ARR of size n, the task is to find the count of elements, whose value is greater than all of its prior elements, greater than all of its prior elements. First element of the array should be in the count. For example, if input test case first array is 7, 4, 8, 2 and 9. So suppose if these are the array elements, then what is your task? So your task, you have to find the count of the elements, जो एलिमेंट उसके प्रायर एलिमेंट से ग्रेटर है. तो पहला एलिमेंट कंपलसरी तुम्हें उसमें काउंट करना है. ओके, कुछ भी हो, फर्स्ट एलिमेंट कंपलसरी रिजल्ट में काउंट करना है. तो मतलब एटलीस्ट काउंट कंपलसरी 1 होगा तुम्हारा. तो सेकेंड वैल्यू 4 इज 4 से मतलब 4 के प्रायर एलिमेंट्स अभी 7 है, तो 4 है क्या ग्रेटर नहीं है, तो 4 को काउंट नहीं करना. नेक्स्ट 8 अभी उसके जो प्रायर दोनों एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, 7 से भी ग्रेटर होना चाहिए, 4 से भी ग्रेटर होना चाहिए. तो यस, 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 इज ग्रेटर देन 4. तो 8 सेकेंड काउंट यहाँ होगा तुम्हारा, मतलब फर्स्ट काउंट 7, दूसरा काउंट 8. नेक्स्ट वैल्यू इज 2 के प्रायर एलिमेंट से 7, 4, 8, तो ग्रेटर है क्या, नहीं है. Then next 9 is greater than all the prior elements. 7 से भी greater है, 4 से भी greater है, 8 से भी greater है, 2 से भी greater है. तो next count यहाँ होगा. तो तुम्हारा count कितना होगा? So count will be 3. Yes, question clear हुआ क्या? Yes, बोलो. Is question is clear? Okay. So how to solve this problem statement? Okay, question repeat करना है. Yes, केतन, या लॉजिक फिर से एक्सप्लेन करो. तुम्हें one array is given of size n. So your task is to find the count of elements. Whose value is greater than its prior element. For example, suppose ये array दिया है तुम्हें 7, 4, 8, 2, 9. तो उसमें पहला एलिमेंट कंपलसरी काउंट करना है, क्योंकि उसके प्रायर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको काउंट करना है. तो यहाँ 7 पे काउंट 1 हो गया. दूसरा एलिमेंट 4 ग्रेटर देन है क्या 7, उसके प्रायर एलिमेंट 4 का प्रायर एलिमेंट कौन सा है तुम्हारा 7. तो 4 ग्रेटर देन 7 है क्या, सो नहीं है, तो 4 को काउंट नहीं करना है. नेक्स्ट 8 इज ग्रेटर देन 4 एंड 7, दोनों से ग्रेटर है क्या, सो यस. तो दूसरा काउंट यहाँ 8 पे से काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. देन 2 ग्रेटर है क्या उसके प्रायर एलिमेंट से, तो नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करना. नेक्स्ट 9 ग्रेटर देन इसके 9 इज ग्रेटर देन उसके प्रायर एलिमेंट, यस, तो 9 पे काउंट 3 हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस केतन. यस सर. ओके, सो क्या कर सकते हो इसमें? लूप पर 1 से स्टार्ट करेंगे और i-1 का एलिमेंट ग्रेटर रहा तो i से, तो काउंट प्लस कर देंगे और काउंट स्टार्टिंग में 1 रखेंगे.
हाँ बट एक एलिमेंट से नहीं कंपेयर करना हमें ना। नहीं लूप 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके 1 से -1 का एलिमेंट ग्रेटर आ तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। जस्ट पता दो फिर से। मैं लूप स्टार्ट करता हूँ फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n i प्लस प्लस। ओके if arr of what count I minus 1. okay I minus 1. just minute count is equals to 0 तो ARR of I minus arr of I is greater than arr of I minus 1 ऐसा ना। उल्टा होगा। ARR of I minus 1 is greater than ARR of I. नहीं वो तो गलत बोल रहे हो तुम। प्रायर एलिमेंट से कंपेयर करना है ना हमें कि ये एलिमेंट प्रायर एलिमेंट बड़ा। हाँ ये एलिमेंट प्रायर से ग्रेटर होना चाहिए तो काउंट करना है। मतलब 4 जो है उसका प्रीवियस एलिमेंट उसके पीछे वाले मतलब ये उसके प्रीवियस पोजीशंस 4 के प्रीवियस वाला एलिमेंट बड़ा चाहिए। हाँ वो बड़ा नहीं चाहिए। ये ग्रेटर है 4 ग्रेटर है। प्रीवियस एलिमेंट से ये एलिमेंट ग्रेटर है तो उसको काउंट करना है। ओके जैसे 8 उसके प्रीवियस एलिमेंट कौन कौन है 7 एंड 4 तो 8 7 से भी ग्रेटर है 4 से भी ग्रेटर है तो 8 को काउंट करना है ऐसे बोला मैंने। हाँ सारे एलिमेंट से नॉट ओनली अ सिंगल एलिमेंट। तो ये गलत है ये ऐसे नहीं कर सकते। तो सारे एलिमेंट से तो हाँ सारे एलिमेंट से मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ ये एग्जांपल में 9 को तुम्हें सिर्फ 2 से कंपेयर नहीं करना है। 9 उसके प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स है वो सबसे ग्रेटर होना चाहिए। प्रीवियस लार्जेस्ट को एक वेरिएबल में सेव करो। यस करेक्ट मतलब जो प्रीवियस लार्जेस्ट होगा प्रीवियस वाला जो लार्जेस्ट होगा उस लार्जेस्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करके उसके साथ कंपेयर करेंगे मतलब मैक्स फाइंड आउट करेंगे। ये किसने लिखा है ये निखिल। ओके मतलब मैक्स फाइंड आउट करना है हमें प्लस काउंट भी लेना है। तो यहाँ क्या करते हैं हम अभी मैं आरे इनपुट नहीं ले रहा हूँ जस्ट मैं आरे डिक्लेयर करता हूँ डायरेक्टली या यू कैन एक्सेप्ट द आरे फ्रॉम द यूजर। सो स्कैनर न्यू first we'll accept the size sc dot next int then we'll declare the integer array arr of in equals to new int of size n then we'll accept the array elements for I equals to 0 I less than n I plus plus arr of I equals to sc dot next int. So here we accepted the array elements. Then we'll take one integer max variable okay जिसमें arr of 0 की वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। ओके मैक्स फर्स्ट टाइम मैक्स क्या होगा तुम्हारा arr of 0 का। देन इंटीजर काउंट जिसकी वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कंपलसरी काउंट करना है तुम्हें उसके मतलब फर्स्ट एलिमेंट के मतलब प्रीवियस कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको कंपलसरी काउंट करना है तो काउंट को मैं 1 से लेता हूँ और विल स्टार्ट द लूप विथ 1 integer I is equals to 1 I less than the size of array I plus plus then if arr of I is greater than max तो max equals to arr of I and count plus plus and count plus plus. Then after the loop print the value of count.
ओके, जस्ट टेक द दिस, यही एग्जांपल सपोज, तो इसमें 7 तो पहले कंपलसरी काउंट होगा, काउंट की वैल्यू 1 ऑलरेडी ली है हमने, और मैक्स के अंदर पहले से हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स के अंदर वी स्टोर द 7 फर्स्ट वैल्यू दैट इज 7, देन लूप स्टार्ट किया 1 पोजीशन से, तो मतलब नेक्स्ट पहले पोजीशन पे क्या है तुम्हारा 4, 4 ग्रेटर देन 7 है क्या, सो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, देन आई प्लस प्लस नेक्स्ट 8, और मैक्स के अंदर 4 ग्रेटर नहीं है, तो मैक्स के अंदर ऑलरेडी 7 है, तो अभी 4 के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में मैक्स जो है वो ऑलरेडी हमारा किसके अंदर है, मैक्स के अंदर है, तो मैक्स के अंदर 7 ही है, तो नेक्स्ट जब 8 आएगा तो वो सिर्फ मैक्स के साथ कंपेयर होगा, सिर्फ किसके साथ कंपेयर होगा, उन दोनों में से जो मैक्स था, तो उन दोनों में से मैक्स कौन था, तुम्हारा 7 ही था, तो वो ऑलरेडी मैक्स के अंदर ही स्टोर्ड है, तो एयर ऑफ आई 8 इज ग्रेटर देन मैक्स, सो यस, सो मैक्स इज इक्वल्स टू एयर ऑफ आई, मतलब मैक्स के अंदर अभी हमारा स्टोर हो गया 8, तो मैक्स की वैल्यू हो गई 8, एंड काउंट प्लस प्लस, यहाँ 8 के लिए काउंट हो जाएगा हमारा 2, फिर नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट वैल्यू एरर ऑफ नेक्स्ट वैल्यू इज 2, 2 ग्रेटर देन मैक्स नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करना है, वो मैक्स में भी नहीं रहेगा, मैक्स में 8 ही रहेगा, मतलब इन चारों में से मैक्स कौन है तुम्हारा 8, फिर आई प्लस प्लस नेक्स्ट वैल्यू 9, 9 इज ग्रेटर देन मैक्स, यस, तो मैक्स के अंदर 8 के जगह आ जाएगा हमारा 9, एंड काउंट प्लस प्लस हो जाएगा 3, अगर नेक्स्ट वैल्यू आती है तो वो सिर्फ किसके साथ कंपेयर होगी, 9 के साथ, बिकॉज बाकी के सारे वैल्यू 9 से ग्रेटर है, सॉरी स्मॉल है, so this way we can find the count of elements whose value is greater than the prior elements. So agar in this example, सर थोड़ा एक स्क्रीन में दिखाऊं? हाँ just minute. So first I will enter the size of array. Suppose here size of array is 5. The first element is 7, then 4, then 8, 2, and 9. So count is 3. Is it clear? किसी को डाउट है क्या इसमें? Sir, you didn't update max variable with max value. Yes, निखिल क्या बोला? Is it clear? सर क्वेश्चन नंबर लिख दो ना साथ में। किसी ने नोट किया है क्या? वो चैट बॉक्स में टाइप करो ना जस्ट। हेलो, किसी ने नोट किया है क्वेश्चन? ये तो चैट बॉक्स में टाइप करना जस्ट। ओके, जस्ट वेट, ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ चैट बॉक्स से ले लो। दूसरा इनपुट देना है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। अनदर एग्जांपल,
suppose array size is 5 and यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसमें अभी 1 तो काउंट होगा ही होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 तो 2 भी काउंट होगा, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 तो 3 भी काउंट होगा, 4 इज ग्रेटर देन 1 2 3 तो 4 भी काउंट होगा, 5 इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 तो 5 भी काउंट होगा, तो यहाँ काउंट कितना मिलना चाहिए मुझे 5. इज इट क्लियर? Okay, so next problem statement. Next problem statement. Note down the problem statement. One student is finding the factors of the given number. One student is finding the factors of the given number. Help that student. Help that student Sir, एक starting से लिख दो ना. one student is finding the factors of the given number. Finding the factors of the given number. Help that student to find the factors of that number. To find the factors of that number. To find the factors of that number. If for example, if input is 6, if input is 6, so what are the factors of 6? Yes, bolo. What are the factors of 6? 1 2 3 6. Yes, 1 2 3 and 6. 1 2 3 and 6. So just easy program is there. So how to solve this? So easily you can find it. So we'll accept one number from the user. We'll easily find. Then we'll start the loop with 1. So integer a is equals to 1. A is less than equals to number a plus plus a plus plus. So we'll check if n जो भी number है mod a equals to 0, मतलब अगर divisible है तो a की value जो भी होगी it will be the factor of that number. A, it is a factor of that particular number. The print that. So system.out.print the value of a. It is a factor. So print that value. So first suppose if number is 6 तो 1 से डिवाइड हो रहा है क्या, so yes 1 प्रिंट होगा. देन 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, yes तो 2 भी प्रिंट होगा. फिर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, yes तो 3 भी प्रिंट होगा. फिर 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं है, 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी प्रिंट होगा. सो जितने भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है वो सारे नंबर्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे. Suppose 9. So factors of 9 are only 1, 3 and 9. If I enter the number as 10,
So 1, 2, 5 and 10, these are the factors of 10. Just take the screenshot, easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, next question इसी से related. You have to check the number is perfect number or not. You have to check. Your task is to find a given number. Your task is to find a given number is the perfect number. Given number is the perfect number or not. So what is a perfect number? Yes, what is a perfect number? Yes, sum of the factors equals to that number. तो अभी फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए उसमें तुम्हारा वो नंबर एक मतलब ना चाहिए एक्सक्लूडिंग दैट नंबर. तो फॉर एग्जांपल 6. तो excluding 6, which are the factors of the 6? 1, 2 and 3. If we do the addition of this 1, 2 and 3, so 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 equals to 6. 1 plus 2 plus 3 equals to exactly equals to same number आता है. Okay, addition of the factors. Okay, addition of the factors equals to that number. Addition of factors equals to that number, then it is a perfect number. So how to check? Yes, how to check number is perfect or not? तो अभी हमने factors find out किए, तो just you have to do the addition of the factors. If that factors addition equals to that number, then we can say the number is the perfect. Yes. So we'll do the sum. So here we'll take one sum variable to do the addition of the factors. So if n mod a equals to 0, then sum is equals to sum plus a. सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए. तो जो भी फैक्टर्स है, जैसे अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, वो वैल्यू सम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ. और जब लूप कंप्लीट होगा, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लूप विल चेक सम इक्वल्स टू दैट नंबर. ओके, सम इक्वल्स टू दैट नंबर, देन प्रिंट number is perfect, else system number is not perfect.
So for example 6 is the perfect number. 6 is not perfect. Okay, sorry, लेस देन n होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर उसमें नहीं आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर. So 6 is the perfect number. Another perfect number is the 28. So factors of 28 are 1, 2, 4, 7 and 14. 1, 2, 7, 4 and 14. So addition of 1, 2, 4, 7 and 14 is a 28. So 28 is another perfect number. 28 is another perfect number. सर Yes, बोलो. हेलो. एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए थे क्या? हाँ, ये सारे क्वेश्चंस अभी जो मैं ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस नहीं अभी, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, टीसीएस के. कुछ नहीं, बट अभी मैंने जो सॉल्व किया अभी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं. सर यस, बोलो. रिपीट होते हैं क्या क्वेश्चंस? यस, हो सकता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब सेम एज इट इज तो नहीं देंगे, बट उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं. सो अभी मैं पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करता है, फिर हम वापस टीसीएस के क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसी में ये जैसे प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, रिवर्स नंबर, ये होते हैं. बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं होता तुम्हारा, मतलब जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें कि एक्सेप्ट द नंबर एंड चेक द नंबर इज परफेक्ट, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा. उसके पहले वाला क्वेश्चन, जैसे ये टीचर है, वो स्टूडेंट को टीच कर रही है, उसने नंबर्स दिए हैं, उसमें से उसका टास्क है, उस स्टूडेंट का टास्क है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. इसमें लाइक पैराग्राफ या ऐसी टाइप क्वेश्चन होता है, और उसके अंदर तुम्हें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ऐसा लाइक. तो जैसे मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी मैं कुछ देता हूँ, पहले हम वो सॉल्व करते हैं. सो जस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Write a program to find a reverse of the given number, to find a reverse of any given number, to find a reverse of any given number. So how to find the reverse number? Yes, how to find a reverse number? Yes, कोई बताएगा मुझे कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई भी नंबर दिया तुम्हें, 3 नंबर, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, उसके डिजिट्स निकाल कर. हाँ, यस, यू कैन सेपरेट द डिजिट्स. सो हाउ टू सेपरेट द डिजिट्स? Yes, Naneshwar, how to separate the digits? by dividing number by 10. Yes, by dividing number by 10. Dividing मतलब divide की जगह you can use mod operator. Yes, ये Python में write किया तुमने, ठीक है. So yes, correct. What we can do? So we will accept one number from the user. Then here we'll take one reverse variable जिसकी value starting में 0 ले लेंगे to store the digit.
ओके सो 258 जस्ट मिनिट आधी तो मोबाईल आण रे माझ्या बॅग मधला त्याची बॅटरी संपली वाटतं इथं आणून ठेव बॅग मध्ये बाहेरच्या कप्प्यात मोबाईल तू इथं आणून ठेव ह्याची बॅटरी संपली वाटतं माझ्या बॅग मध्ये हा इथं माझ्या इथं खिडकीत ठेव ना अच्छा ठीक आहे ठेव ओके screen is not visible okay just wait for 2 minutes is my screen is visible now yes the screen is visible Yes. Yes, yes. no Yes, the screen is visible. okay some students are saying no आधी ऐक ना इकडे ना ह्याला तो चार्जर आहे त्याच्यात now is it visible Yes, sir. okay okay so first suppose if number is 258 so if I divide the 258 mod 10 ठीक है किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वैल्यू इज ऑलवेज किसी भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट का डिजिट होता है वो रिमाइंडर आता है तुम्हारा तो यहाँ अभी इस एग्जांपल में 8 आर के अंदर स्टोर होगा और उस नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं क्वेश्चन की वैल्यू वो डिजिट छोड़ के जो पहले वाले जितने भी डिजिट्स हो गए वो रिटर्न करेगा आंसर तो यहाँ कितना आंसर आएगा तुम्हारा 25 और वो वैल्यू एन के अंदर स्टोर होगी तो एन तुम्हारा यहाँ चेंज हो जाएगा सो नेक्स्ट इज रिवर्स इनटू 10 रिवर्स अभी राइट नाउ हमने 0 लिया सो 0 इंटू 10 0 प्लस आर की वैल्यू 8 तो यहाँ इसमें रिवर्स के अंदर अभी राइट नाउ 8 स्टोर होगा एक बार फिर से देखो 258 मॉड 10 सो 258 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर वैल्यू इज लास्ट डिजिट दैट इज 8 एंड 258 डिवाइड बाय 10 इट विल बी 20 जो भी पहले वाले डिजिट्स हो गए वो क्वेश्चन की वैल्यू आती है वो एन में स्टोर कर दिया तो दैट इज अ 25 और फिर रिवर्स 10 जीरो है सो 0 इंटू 10 0 प्लस आर की अभी की वैल्यू 8 एज इट इज स्टोर होगा फिर से 25 अभी नंबर मेरा 25 है 25 मॉड 10 इट विल बी 2 ओके 25 मॉड 10 5 आएगा एंड 25 डिवाइड बाय 2 अभी रिवर्स में 8 स्टोर हुआ था तो 8 इंटू 10 80 प्लस आर की अभी की वैल्यू 5 सो 85 स्टोर होगा इसमें वापस आएगा तो नंबर हमारा 2 है सो 2 मॉड 10
डिवाइड होता ही नहीं तो रिमाइंडर एज इट इज 2 आएगा, एंड 2 डिवाइड बाय 10 क्वेश्चन की वैल्यू आएगी 0, और ये 85 पहले स्टोर हुआ तो 85 इंटू 10 850, 850 प्लस 2 852, 852 वो रिवर्स के अंदर स्टोर होगा, वापस आएगा तो नंबर मेरा 0 हो चुका है, तो 0 हो चुका है तो लूप स्टॉप होगा, फिर लूप स्टॉप होने के बाद इट इज रिवर्स नंबर हमें प्रिंट करना। So this way we can find a reverse of any, this way we can find a reverse of any number. Suppose 234, so 432, that is a reverse number. Yes, किसी को डाउट है इसमें? Okay. Now next ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, check to check the given number, to check the given number, to check the given number is Armstrong or not, to check given number is Armstrong or not. So what is the Armstrong number? Yes, yes, what is the Armstrong number? Just tell me what is the Armstrong number. No, नहीं सुहानी, थोड़ा अलग है। Addition of the cube of the digits, no addition of the cube, not cube, not cube, और कुछ, no cube, निखिल, not square, digit into n की addition, digit into digit raised to n. What is the n here? N is the number of digits. Yes, correct, Naneshwari. Okay. What is the Armstrong number? So Armstrong number is a number. Sir, Yes, yes, bolo. sum equal to original number. Sum of the what? Sum of the digits. Digit. अभी suppose एक just example, if number is 153. Now इसमें ये 3 digit है. Okay, this is a 3 digit number. So 3 digit number है तो क्या करना है तुम्हें? If number is a 3 digit, 1 raised to 3, मतलब 1 raised to 1, okay, 1 power 3 plus 5 power 3 plus 3 power 3. ये 3 डिजिट के लिए, दिस इज ओनली फॉर 3 डिजिट। अगर नंबर मेरा 1 2 3 4 है तो इस केस में तुम्हें क्या करना है? 1 पावर 1 एक्सपोनेंट 4, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है तुम्हारे, अगर नंबर तुम्हारा 4 डिजिट है तो 1 रेस टू 4 करना है, 2 रेस टू 4, 3 रेस टू 4, 4 रेस टू 4 और उनकी एडिशन करनी। अगर नंबर इज अ 5 डिजिट देन 1 रेस टू 5, 2 रेस टू 5, 3 रेस टू 5, 5 रेस टू 5, 4 रेस टू 5, ऐसे करना है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड्स है। अगर तुम्हारा 2 डिजिट का है तो स्क्वायर करना है, 3 डिजिट का है तो क्यूब करना है, 4 डिजिट का है तो रेस टू 4 करना है, 5 डिजिट का है तो रेस टू 5 करना है। इज इट क्लियर?
या क्यूब अगर 3 डिजिट है तो ओनली, ओके, इफ नंबर इज 3 डिजिट देन ओनली क्यूब। अगर तुम्हारा डिजिट 4 डिजिट है तो देन तुम्हें क्या करना है, रेस्ट टू 4 करना है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो पहले तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, ओके, जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है। तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो जावा में अभी नंबर के लिए अंदर डिजिट्स फाइंड आउट करना, तो यही लॉजिक लगाना होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं उस नंबर को स्ट्रिंग में स्कैन करता, तो स्ट्रिंग की लेंथ होती है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो मैं नंबर को इंटीजर में स्कैन करने के जगह डायरेक्टली मैं उसको स्ट्रिंग में स्कैन करता हूँ, एस सी इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, जिससे वो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्कैन होगी। देन इंटीजर नंबर ऑफ डिजिट्स nd इज इक्वल्स टू s1 डॉट लेंथ, जिससे मुझे ये फाइंड आउट होगा कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ओके। इससे मुझे क्या फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर बाकी का लॉजिक अपना इंटीजर सम करना है हमें, सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस, ओके, वो नंबर जो भी है उस नंबर को, अभी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर n1 इज इक्वल्स टू integer dot parseInt. This is an inbuilt function which converts the string value into the integer. Then that number you have to store in another variable n1, because जब हम loop write करते हैं वो previous वाला, तो उसमें वो n1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसे हमें दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। देन while बाकी का लॉजिक तो वही डिजिट सेपरेट करने, रो r is equals to n1 mod 10 divided by 10, then sum is equals to sum plus मैथ क्लास है इनबिल्ट, और इस मैथ क्लास के अंदर इनबिल्ट पावर फंक्शन तुम्हें प्रोवाइड किया है, सो दैट वी कैन यूज किसका पावर फाइंड आउट करना है, वो डिजिट आर रेस टू नंबर ऑफ डिजिट्स, और ये वैल्यू तुम्हें इंटीजर में टाइप कास्ट, क्योंकि वो डबल में रिटर्न करता है, तो यू हैव टू टाइप कास्ट दैट वैल्यू इनटू द इंटीजर। देन आफ्टर लूप जब कंप्लीट होगा, सो यू हैव टू चेक कि जो सम है इक्वल्स टू तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, तो इसमें ओरिजिनल नंबर n1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इससे पहले हमने एक एक्स्ट्रा, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन number is not Armstrong. Okay, so just take the example. If my number is 153, so 153 Armstrong number है, तो 153 mod 10 करेंगे तो यहाँ पहले R में 3 आएगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स इसके 3 है अभी, और फिर नंबर हो जाएगा मेरा 15, तो यहाँ पावर फंक्शन आर में 3 है, 3 एंड nd की वैल्यू भी है 3, तो 3 रेज टू 3 27 आएगा, 27 प्लस सम की वैल्यू 0 है, तो 27 प्लस 0 यहाँ 27 स्टोर होगा। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम 15 mod 10 5, देन 15 डिवाइड बाय 10 1, और फिर ये 5 का क्यूब देगा 125 प्लस 27, दैट विल बी 152, देन नेक्स्ट टाइम इट विल रिटर्न 1, और यहाँ नंबर हो जाएगा 0, तो 1 का क्यूब 1, 152 प्लस 1 का क्यूब 1, 153, फिर नंबर 0 हो चुका है, n1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो लूप स्टॉप होगा। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लूप सम की वैल्यू जो भी है 153 एंड n2, अगर मैं n1 के साथ कंपेयर करता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बिकॉज n1 तुम्हारा लूप के अंदर 0 हो चुका है, इसलिए पहले वो n1 की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखी है n2 में, अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। So this way we can check the number is the Armstrong number or not. Number is not Armstrong. Is it clear? Yes, bolo.
Take the screenshot. ओके, ठीक है. सो आज यहाँ हम स्टॉप करते हैं. So tomorrow we'll solve the different problem statements using arrays, strings, two-dimensional arrays. जो questions TCS या दूसरे किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड्स में पूछे वो भी हम सॉल्व करेंगे. तो आज के सेशन में कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो मुझे. एनी डाउट्स? Sir, please share all the list of questions on Telegram. हाँ भाई बोला ना, मुझे अभी लिंक नहीं है ना. मैं लिंक तुम्हें पहले प्रोवाइड करनी होगी, उस पर फिर मैं कल करता हूँ. हेलो. हाँ बोलो ओमकार. हेलो. हाँ बोलो ना. सर पाइथन में दे सकते हैं. पाइथन में तो मतलब ये जो सेशन हमने जो ट्रेनिंग सेशन रखा है वो सिर्फ जावा में रखा है. तो मैं अभी हमारे जो हेड है, टेक्निकल हेड, उनसे पूछता हूँ कल वो क्या बोलते हैं, उससे अकॉर्डिंगली मैं कल बता दूंगा तुम लोग. सर हमें जावा नहीं आता है सर, इसलिए थोड़ा हार्ड जा रहा है समझ. ओके ठीक है, मैं पूछता हूँ उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक. ओके. और कुछ डाउट्स? केवल ठीक है. सो कोई डाउट्स नहीं है तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं. सो यू कैन लीव द मीटिंग. ओके. ठीक है. देख, दिस सेशन इज प्योरली फॉर जावा.